Hello, viewers. I'm Vibhuti Jha. This is Jaipur Dialogue USA, and considering the fact that whole lot of American elections have brought about such an exciting change here that people are considering: will it make an impact on Indo-US relationship? Will it enter a new phase? Because India-US relationship has always been very romantically and pragmatically talked about as strategic relationship, natural allies, but it has never furthered in its goal and ambitions. As Mr. Jaishankar said, perhaps very appropriately, that while other countries may have something to fear, we have nothing to fear. Taking the cue from there, I'm inviting two people here. Mr. Aditya Satsangi ji, whom most of you know because of his Sathology, where he is doing an outstanding work. Aditya ji, welcome to the show. And I have Dinesh Neelavar ji. He is coming on Jaipur Dialogue for the first time. And welcome to the show, Dinesh ji. You are a technology entrepreneur. And it is interesting to hear the view of the technology entrepreneurs in this matter. So, Aditya ji, I know and I want to tell the universe watching us today that you were yesterday honored by the Apache Nation as a valuable contributor to their cause and what you have done. So, congratulations for that, Thank you. and wish you all the best for improving the pagan relationships and the relationships of the natives and speaking out for them. Thank you. Thank you very much. That having said that, let me start with you, Aditya. Do you think India-US relations is entering a new phase? The pomp, glamour, the depression, the skeptics, the cynic aside, your thoughts. Vibhuti ji, great question, and thank you for recognizing me because you are one person in Just North one America. second. Whose computer is making that double voice? Dineshji, is it yours? No, not mine. I'm going to mute my voice also. Try muting it, then see. Okay, go ahead, Aditya. Yes, it is yours. Thank, thank you for recognizing what you did. You mean a lot to me in North America, और आपके words matter a lot to me personally. Thank you. और तो सबसे पहले इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा. एंड एक है कि हमको जब यूएस का गवर्नमेंट चेंज हो रहा है 70 दिन में होगा, उस समय रशियन वाइस प्रीमियर is in India. Phenomenal. Trade deals are happening. India is removing the rupee backlog, making rupee more functional. आपने देखा होगा कि रुपी का डिवैल्यूएशन भी ज़्यादा हुआ है जैसे ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है, तो वो नॉर्मल साइकिल है, वो टेम्परेरी अप है यूएस मार्केट में, बट वो वापस वो स्टेबलाइज हो जाएगा बाद में. लेकिन रुपी इज गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड लेवल इन कन्वर्जन डॉलर वर्सेस रुपी. तो अब अमेरिकन इलेक्शंस में जो आउटकम्स बाहर आए हैं और जयशंकर का स्टेटमेंट्स हैं, इस पे हमको किस तरह देखना चाहिए, वो ये है कि नंबर वन, जो अमेरिकन, ये इलेक्शंस अमेरिकन्स ने अमेरिका के लिए बोला, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है, इसमें फॉरेन पॉलिसी नहीं आती. इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन चाहते हैं कि आज की जो नई अमेरिकन गवर्नमेंट आने वाली है ट्रम्प की, वो सिर्फ अमेरिकन इश्यूज पे ज़्यादा फोकस करे. और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया शुरू में ही कि जयशंकर ने बोला इसका भारत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, भारत अपना करता रहेगा. मींस मल्टीपोलर वर्ल्ड इज अ रियलिटी. और अमेरिकन इकोनॉमी इतनी इस तरह स्प्रेड आउट है कि दुनिया में जो भी होता है वो अमेरिकन इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि 350 मिलियन लोग अगर दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी चला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गलत है मेरे हिसाब से. वो दीजिए, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि 1.4 बिलियन लोगों का देश नंबर 1 इकोनॉमी क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है कहीं ना कहीं. इस पे हमको एक डिटेल एनालिसिस होना चाहिए कि क्या अमेरिकन प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, क्या हर अमेरिकन आदमी 10 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है जापान से, 10 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है चाइना से, वो तो हमको दिखता नहीं ऑन द ग्राउंड. इनफैक्ट अमेरिकन ज़्यादा नेट कंज्यूमर्स, हम लोग दुनिया से खरीदते हैं अपने डॉलर्स बेच के, तो आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज द डॉलर. और जब दुनिया बात करती है मल्टीपोलर वर्ल्ड की,
जहाँ पे जो दो देश जो है, कोई बाहर जो नॉन डॉलर देश है, वो अपनी करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन सैंक्शंस को अवॉइड करें। तो जो भी हमको यूफोरिया मुझे दिख रहा है इस समय अमेरिका में इकोनॉमी के ऊपर, वो मुझे टेम्परेरी दिखाई दे रहा है। यू आर ए बैंकर, और मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में आपको बताया कि वो यूफोरिया टेम्परेरी है, और इट डजंट मेक मी एंटी यूएस और प्रो यूएस इन एनी केस। मैं जस्ट डेटा को स्टडी करके आपको बता रहा हूँ। तो जो भारत का स्टैंड है, भारत पे इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। इनफैक्ट रशिया और भारत का कोऑपरेशन बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, और डिफेंस डील्स भी भारत जो है अमेरिकन रिस्क को अवॉइड करेगा। F404 इंजन की बात आप देख लीजिए, पैसा देने के बाद भी इंजन भारत में नहीं है, तो इट स्पीक्स वेरी पुअरली ऑफ अमेरिका, वेरी पुअरली। तो ये सब So, चीजों को ट्रम्प कैसे फोर्स करेंगे? follow up क्वेश्चन जो यहाँ होगा कि जैसे इंजन सप्लाई नहीं थी, पेमेंट करने के बाद भी, that happened in Biden administration. Do you think that will change in Trump administration or not? नहीं, मेरे हिसाब से वो चेंज, मेरे हिसाब से इतना फोकस नहीं है उनका उस एरिया में। ये Okay. वो मुझे लगता नहीं कि होगा, फोकस नहीं है, क्योंकि अभी जैसे काश पटेल के बारे में कल ब्रेकिंग न्यूज आया था कि वो सीआईए डायरेक्टर बन जाएंगे। तो That was अभी just news. That was just news. That was just. जस्ट न्यूज, कंफर्मेशन नहीं। वो मेरा सोचने का तरीका भी नहीं है, क्योंकि वो सब फेक न्यूज लग रही है, कंफर्म न्यूज नहीं है। कोई Correct. गोरा ही बनेगा सीआईए डायरेक्टर, कोई इंडियन नहीं बनेगा, बट काश विल हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में इस पे फोकस है ही नहीं। अमेरिका एज ए हिस्ट्री, अमेरिकन यूएस गवर्नमेंट की देखेंगे, जो उन्होंने नेटिव्स को प्रॉमिस किए हैं, एक भी ट्रीटी फुलफिल नहीं करी है। किसी को भी कोई भी ट्रीटी फुलफिल नहीं की गई है अभी तक। और आर्म्स भी जब बेचे गए हैं, क्योंकि अमेरिका, भारत जो है इनहेरेंटली अमेरिका का दुश्मन देश है इन द पॉलिसी वर्क ऑफ सीआईए। और चाहे वो कुछ भी कर ले भारत, ये भारतीय पॉलिसी मेकर्स को बहुत अच्छी तरह मालूम है। आप जाके आईएस लॉबी को पूछ लीजिए मसूरी में या कहीं भी पूछ लीजिए, उनको अच्छी तरह मालूम है। तो ये जो एंग्लो सैक्सन सुप्रीमेसी एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में कोई चेंज होगा। जो बहाना बनाया गया था कि जी के पास सप्लाई नहीं है, वो नहीं है, मैंने डेटा देखा, जी के पास 10 टाइम्स मोर कैपेसिटी है, 10 टाइम्स मोर कैपेसिटी विच दे कैन रीयूज और यूज फॉर इट्स फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या ट्रम्प एडमिन चेंज होगा, होना तो चाहिए, क्योंकि हम और आप तो दर्शक हैं, वी आर ऑब्जर्वर्स, एटलीस्ट आई एम द ऑब्जर्वर। हमारा इनसाइड में कोई न्यूज नहीं है कहीं पर भी। लेकिन आई डोंट थिंक सो, लुकिंग एट द ट्रेंड्स, इस पे प्रायोरिटी दी जाएगी। उल्टा इसको यूज किया जाएगा फॉर अदर ट्रेड डील्स। वो अब होने वाला नहीं है। भारत विल फुलफिल इट्स इंडियन रिक्वायरमेंट, क्योंकि भारत अपनी एयरफोर्स खुद मेंटेन करेगा ना। अमेरिका के बेसिस तो नहीं इंडियन एयरफोर्स चलती है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी इज नॉट रनिंग ऑन अमेरिकन लार्जिस। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी विल वर्क ऑन इंडियाज प्रायोरिटीज। तो किसी भी तरह उसको फुलफिल करेगा, चाहे कहीं से भी करे। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अब इस एरिया में सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ चुका है, और होपफुली विल सी गुड न्यूज़ सून। Good. I like your opening statement. The independence, the आत्मनिर्भरता of Bharat under Modi, and sanction की बात कही। आज ही टाइम्स नाउ पे कॉन्वर्सेशन हुआ था, जब मैंने कहा था कि 3 साल से मैं कहते आ रहा हूं अमेरिका को कि स्टॉप दिस सैंक्शन पॉलिसी बिकॉज इट विल बूमरैंग ऑन यू। Because if other people begin to wean themselves away, अगर उससे अलग करना चाहें कि हम अमेरिका से हमें कोई लेना देना नहीं है, डॉलर पे डिपेंडेंसी नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? अगर आप अपनी मर्जी से पॉलिसी डिफरेंस के नाम पे हमें सैंक्शन ठोक देते हैं, तो हम तो लाचार हो जाते हैं ना फिर। तो nobody likes a bully. Remember that part. That's very important. Nobody likes a bully. The entire Back to the Future movie is about bullying. So when I don't like bullies. So Dineshji, considering what you heard from Aditya and what you are seeing, your thoughts on that? Yeah, thank you, Vibhuti Ji. A pleasure to be in your show and always listen to your commentary and great, opinions. Thank you. So I will tell you a few things. I will break it into two parts. One is current situation. Then I want to go back to the history of the U.S.-India relationship, But because when you that's talk about the history, don't take 30 minutes. I want everything concise in sure. few minutes, because then we can have more Few points minutes, five covered. minutes. Yeah. Yeah, Yes. yeah. It will Yes. be very Thank you. short. Thank you. So, Thank you.
see, there is few things in the U.S. Politics, and especially the U.S. foreign policy. One is US is a military power. So what happens is it has come to a stage when it is hegemony and it's a hyperpower, and now it is coming back into a normal power because of the multipolarity which is slowly coming into the world. We can see from the statements of Russia and other countries. What is happening is USA was used to uh, controlling his allies, so-called allies, NATO countries, and they will actually determine how the war should be fought. Okay, India is not in this game. Okay, that is the key thing to understand. India has an independent military and independent policies, so it does not fit into the American. There are some attempts to make sure India comes within that game plan, okay, which is the game plan within the NATO and a lot of other regions. Quad is being built in that manner, but it's not going in the military way because it's more of a rescue, more of a vaccine and other areas of cooperation. Okay, so that is the first thing to understand the difference between India role in the overall scheme of things with the USA and USA's other allies. That is the difference. Second one is inside USA there are different lobbies, which we really don't. Indian commentaries do not talk about it, but it is very powerful, which is the big elephant. One is the China lobby, which has built over a long time with the trade, and Chinese lobby is sitting there and is able to veto many policies, including military sales to India. This is something we need to understand. Second, there is the Islamic uh, groups, lobbies who are there, including our Pakistan lobby, who will put pressure to reduce the engagement with India, which has been there for the last Cold War in the last 50 years. So I'll come back to this old history. 50 years ago, after the 1971 war with Pakistan, USA and India has signed the agreement with Russia or the Soviet Union back then. India was kept away in the sense Indian government was not engaged. Only the Indian Americans were there inside America, so they were quite significant, small number at that time, and they were given the opinion and first place in terms of their views over and above the Indian government. That time Indira Gandhi was the prime minister, and with the emergency and a lot of other nuclear tests by India, so Indian government became in the background, and Indian Americans' voice became the dominant part of the India USA engagement. This is something many people don't understand. If you go back even further, 1960s, already there was a good agreement between Indian government and USA government because of the Tibet issue, where India was engaged in the Tibet border by the agencies of USA before 1962. And after 1962, there was still cooperation going on, and India was offered many defense deals that time between 1962, 63, 64. But that time, you see that if you go back to the archives and read the history, the lobbies of China and Pakistan came in, Ayub Khan and China came in and stopped the arms sales to India during the Kennedy administration before he was assassinated. This is a key thing to understand. That Mm, time, that lobby was small. India was small. Lobbies of China was isolated. Nobody wanted to talk to China, and Pakistan was shouting up and down. At that time, these small lobbies was engaged, and for the Cold War reason, they said they need to first engage with China and with Pakistan because they need to defeat the Soviet Union and become the global superpower. So they engaged them first, and India was put in the background. This is something we need to understand. Now it is India's time to come forward, and those lobbies are already so big, it is difficult to just displace them or change it.
That is why India has to grow. India has to grow into a $10 trillion economy. India will have an independent policy. And you see this BRICS and a lot of other global multilateral institutions coming in to give the place for India in the new world order. This is the history to understand, which is missing from many commentators, which including Indian commentators, whom they should read this history properly and come to understand where India is because of the past, where we are in the US foreign policy uh, uh, history. That's my Thank you. comment. Thank you. Aditji, your thoughts on what Dinesh ji was talking about? अपना म्यूट कर लीजिए आप, Uh, दिनेश जी. he made some valid points on the history side. See, when we are talking about India and USA, I don't think so China factors in. मेरे हिसाब से, I may be totally wrong there. क्योंकि चाइना का फैक्टर इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना और चाइना एंड द यूएस. चाइना डजंट फैक्टर इन इंडिया यूएस रिलेशंस, मेरा ऐसा मानना है. यूएस विल चाइना को कितना भी यूज, सी चाइना को यूएस ने अच्छी तरह यूज किया, मूर्ख बनाया. उनको डॉलर का पेपर दिया और उनसे सारा गुड्स खरीदा. देयर इज अ डीप रिजेंटमेंट इन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन कि $3 ट्रिलियन मीन $3 ट्रिलियन प्रिंटिंग. वो तो अमेरिका ने कोविड के समय में खुद ही प्रिंट कर दिया अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए. तब उनको समझ में आया कि हमको इतने सालों से मूर्ख बनाया है. और भारतीय लोग बड़े तिकड़मबाज हैं. हम लोग तो एंशिएंट ओरिजिनल सिविलाइजेशन, हम लोग इस समय नहीं घुसते कभी भी. हमने अमेरिका को जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी टफ टाइम दिया, और बीजेपी की गवर्नमेंट ने उल्टा और भी टफ टाइम दिया. तो इसीलिए ट्रम्प बड़ा रैटल्ड है. इंडिया इज अ टफ नेगोशिएटर. ठीक है, टफ नेगोशिएटर तो होंगे ना, हमारे पास बुद्धि है. हमको मालूम है कि आपका पेपर करेंसी का वैल्यू आपके लिए कुछ नहीं है. आप दिखाना चाहते हो हमारे लिए बहुत कुछ, और कन्वर्जन रेट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन रेट्स आर सेट. बाद में जब रिलीज होगा ना डेटा पिछले अगले 10 साल में, पता लगेगा कि खाली पेपर बेच के खाना खरीदा है अमेरिका ने. अब रियलिटी हिट होगी मल्टीपोलैरिटी में कि ये सब पैसा अमेरिकन को पे करना पड़ेगा रियल मनी से. एंड दैट टाइम इट विल बी द रियल इकोनॉमिक्स टॉकिंग. और इकोनॉमिक्स के अभी आप मेरे को इकोनॉमिक्स फंडामेंटली आप बता दीजिए, जो कंट्री हर 8 साल में कोलैप्स करे, कौन सी इकोनॉमी जानता है वो? आई डोंट अंडरस्टैंड. मैंने अपने लड़के को यही बोला कि बेटा सब कुछ सीखना, लेकिन अकाउंटिंग मत सीखना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स मत सीखना. वो अपनी सनातन इकोनॉमिक्स से बेटर है. सी हमारा लाइक हम लोग सच बोलना भूल गए. हमको लगता है कि हम अपने इंटरेस्ट बचाएंगे, थोड़ा सा कोटा हो करके इनको चढ़ा के बढ़ा के. ये एक बड़ी पुरानी नीति है, कभी भी असुर का घमंड न बढ़ाए. असुर का घमंड न बढ़ाए. असुर को हमेशा उसकी आईना दिखाते रहे, और कठोर भाषा में बात ना करेगी. असुर तो पागल है, वो तो कुछ भी कर देगा. तो अमेरिका की स्टोरी जो है एक टेम्परेरी स्टोरी है. मुझे ऐसा नहीं लगता इसका लंबा सीरियसली. और जयशंकर जी को महाभारत का ज्ञान है, और भी हमारे विवेक देवरॉय जो इनका देहांत हो गया रिसेंटली, इन सब ने एक अच्छी पॉलिसी बनाने भारत के लिए बना के गए हैं. देखिए, भारत की सभ्यता को हमारे शास्त्रों ने बार बार बचाया है. कहीं ना कहीं से महाभारत वो विजडम हमारे सामने ला देता है कि हम अपने लोगों के लिए, और हमारे देशवासियों को सीखना चाहिए जो भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं, उनको सीखना चाहिए कि आज जो भी हम हैं वो हमारी पूर्व धरोहर, हमारे गुरु, हमारे आचार्यों की वजह से है. और उसका वैल्यू एवरीडे बढ़ता जाता है, कम नहीं होता. जैसे आज के समय में किसी भी देश ने ये नहीं बोला, सबने बोला कि ट्रम्प के आने से डर है. भारत ने बोला आई डोंट केयर. यहां तक कि भय रशिया को भी है, चीन को भी है. भारत ने बोला आई डोंट केयर. व्हाट इट शोज? इट शोज कि हमारा जो एंशिएंट पास्ट है उसका नॉलेज अभी सामने की तरफ आ रहा है. अभी जयशंकर जी को अब हम लोग को लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया तो इतना आतताई देश है अपने अबोरिजिन्स के लिए, न्यूजीलैंड आतताई देश है, कनाडा आतताई देश है, आतंकवादी देश है, अपने ही नेटिव पॉपुलेशंस के लिए उनके साथ अच्छी रिलेशंस की बात क्यों की जा रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि भारत इन लोगों को मैनेज कर रहा है. भारत कुछ अपनी तरफ से, अभी ये बात को मैं, भारत इनको मैनेज कर रहा है
इनकी बुराइयों को, इनको भारत को मालूम है कि ये पागल लोग हैं, लेकिन मैनेज कर रहा है सो दैट पागलपन बढ़े ना. वी डोंट वांट कॉन्फ्रंटेशन, क्योंकि भारत की राइज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. 1.4 बिलियन भारतीयों की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, टॉप मोस्ट. और इसके लिए इन सबके साथ शांति रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आतंकवादी हैं सारे के सारे. ये दे विल क्रिएट डिसरप्शंस इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. अभी ट्रम्प का नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है जो कितना डिसरप्टिव होने वाला है. भारत को इसलिए फर्क नहीं पड़ता. पहली बात तो भारत का एक कर्म बोलिए या गिफ्ट बोलिए कि हम 10,000 किलोमीटर दूर है. ठीक है. अगर आप मेक्सिको के जो रेवोल्यूशनरी 1920 में उनको सुनेंगे, बोलते हैं वी आर सो फार फ्रॉम गॉड एंड सो क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स. स्टेटमेंट. तो भारत का सौभाग्य है कि हम 10,000 किलोमीटर दूर है. That's a good point. That's a very good point. And I wanted to say this here. 10,000 miles away and far from closer to God. दिनेश जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा एक बताई थी पहले. And that's something which I want you to elaborate upon. You talked about the history, and that's a very interesting part of this history that, in my opinion, ever since Jaishankar has come to power as an external affairs minister, he's a hands-on guy. He has enjoyed significant ambassadorial positions. He doesn't need external affairs briefing to make a statement, right? Yes. So, what has happened to that famous Indians, Indian Americans who were controlling the India narrative with the US government at that time? They must be restless and frustrated. Yeah. So, those Indians in Washington, as I call them, they must be a very unhappy lot. And I do know, because we were part of the same WhatsApp groups in which there were certain people who went on record in WhatsApp statement that this Brahmin Jaishankar needs to be fired. And there was a person who also inquired, when are we going to change the government in India? That bothered me, and I left that group. See, this is what is important. So please educate the listeners about the marginalization of the Indian Americans who don't like Modi or who are pro America in that situation. Yeah, so it's a good question, and I will tie Thank all you. this together. Yes. So I talked about Indira Gandhi and the emergency. At that time, it created a big anti-India lobby within the Indian American community who were opposed to Indira Gandhi. So they wanted a regime change. So we had the Janata Dal government after the emergency, and the election was called in, and Morarji Desai was the prime minister and Vajpayee ji was the foreign minister and all that stuff. We know that. So that created a huge, big, influential Indian Americans in America. If you look at Silicon Valley, only 5,000 families were there at that time, 1975. Okay, and it was just the early stage, and overall among entire United States, maybe 500,000 or even less than that were Indian Americans. So this influential lobby, I think Subramania Swamy also escaped from India in the emergency and came to United States. He was in Harvard. So you have all these stalwarts at that point. And there's a good intention because of the emergency, excess of emergency and all that stuff. And during those Cold War period. After that, what happened is 1985, 84, Indira Gandhi was assassinated. You had a lot of issues like the Khalistan issues and a lot of other issues. And Indian Americans became more influential and powerful. Their voice was heard more. And if you look at the Rajiv Gandhi period and VP Singh and later on, our Narasimha Rao, weak governments, or maybe they were under, because of the Indian policy, Indian government policy, Indian Americans became more influential and they were able to influence the Indian government or the Congress party for a long period of time. This is the key to understand where we are at this point. And these influential people are still around in DC. Okay. So there is a, I would say, sentiment. There is a past history
and there is a attitude that they can control the foreign policy of India, departments, and all this stuff. There is this attitude, and they feel that they have done it before. That is the key to understand. And where does Jaishankar ji comes in? He has completely removed everything, all the past influence, foreign influence, and diaspora influence, and everywhere outside, because now it's a BJP government, and removed all the Congress links from our Indian establishment and made it into an independent policy. And he is using the Indian traditions and Ramayana Mahabharata to expand the Indian influence worldwide. Okay, because now we have a different goal. India is going to be a major power with a huge economy. So he has completely gone into a new phase, which is New India, Naya Bharat. Now, what is happening is this whole old system, old establishment is sitting there, including inside India, right? Lutyens, media, there are leftists, all this ecosystem which is still sitting there are making a lot of noise. They cannot accept that Modi has come in and won 3 times, and he's still sitting there and very powerful, and he's able to control this relationship with one of the biggest country in the world economy and influence, and move forward. This is the key to understand where we are at this point. That's why all these enemies of government and anti-Modi and some anti-India too are sitting there, and they are you know, are coming off and on. They're coming down right now, but still they're significant, and that is what we are all up against, right? Now, where we are coming right now is Jaishankar's statement is very critical. Every statement is critical to the foreign policy and understanding the geopolitics. Wherever he makes a statement, you have to read it twice or thrice. When he says that they are not worried about Trump coming back, the reason is already that the 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 path roadmap with India is a relationship, and where is India's place in the future is already been discussed for the last 10 years or 12 years when Modi came in 2014. So it's nothing new, and all the 4 presidents Indian government has discussed, and it's moving forward. So that's not an issue at all. And Trump is inherently a China basher, and that is हमारे लिए बहुत ही अच्छा है. इसीलिए वो सब लॉबी इधर वगैरह है ना, ये सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा. That is the reason why Trump is good for India, because if you look at all of the administration, they were all pro China or pro trade, and they will never put any pressure during this conflict in border with China. If you see which government was doing what, you see that when Trump was there, when it started in 2020 after the COVID, Chinese troops came to the border. What did Trump do? He immediately had multiple meetings, and they shared the satellite information with India on the border troops movement and everything. Compared to immediately after that, when Biden administration came in, you see that difference. You see suddenly there is China became more. It started digging in and sitting there for 3 years. What is happening is, why did they now suddenly reconcile and are going back? Because they have advanced information that Trump is going to win. Before the election, they did that so that they will cut their losses, and this is a geopolitical move, so that they will not come into the receiving end. See, these are the things you need to read very carefully. All Okay, these things are available. point very well taken, and I admire your commentary and your views. By observing what you say, the information is already available. Yes. आदित्य जी, एक सवाल था कि चाइना का जहां तक सवाल है, do you think Biden administration, because of Hunter involvement, was soft on China? And your general thought about the Chinese incursion in America and India, your thoughts on that? See, Chinese तो एक
चाइनीज को हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, कॉपी कैट मेकर, कॉपी कैट्स है। चाइना के पास ओरिजिनलिटी तो होती नहीं है, और चाइनीज के पास ना कभी आज तक कोई युद्ध जीत पाए। वो 1962 का युद्ध तो उनके लिए, अभी उसके बाद क्यों पिटते, अभी तो सारे वीडियोस करने के लिए पिटाई हो रही है 3 महीने से उनकी। सो पॉइंट इज कि अमेरिका अमेरिका ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, ये इतिहास है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई टू कंट्रोल स्टालिन, ये स्ट्रेटेजी, ये हिस्ट्री है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो अमेरिका की औलाद है, जिस तरह ओसामा बिन लादेन है। तो चाइना से अमेरिका क्यों डरेगा? नहीं डरेगा। उसको मालूम है इनकी दुकान बंद कर दो घुटने पे आ जाएंगे। और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की हम बात करें तो अमेरिकन अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं तो पता नहीं क्या हुआ हो गया कोई, हर 4 साल में बदलता है, नया पॉलिसी लेके आ जाता है। ये देश है कि गंचकर है कि बनाना रिपब्लिक है? हर 4 साल में क्या चाइना को इतिहास नहीं मालूम अमेरिका का? क्या रशिया को नहीं मालूम? क्या भारत को नहीं मालूम? सबको मालूम है। लेकिन क्या उस इतिहास का यूज किया जाता है? नहीं। सिर्फ एक देश यूज करता है, वो है भारत, कंसिस्टेंटली। भारत एकमात्र इतिहास को यूज करता है टू डिफाइन द पैरामीटर्स। तो अब अमेरिका को भारत बॉक्स में डाल चुका है। चाइना और भारत में, चाइना को मालूम है कभी जीत नहीं सकता, पिटाई होगी, डेली होती है पिटाई, और भी बढ़ेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है, शायद मेरी वाणी सत्य हो जाए, कि चाइना तिब्बत को भी छोड़ेगा एक समय में आके, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपने बच्चों का फ्यूचर बचाना है। सारे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अमेरिका में पढ़ रहे हैं। हम लोग बोलते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस इन अमेरिका। क्या है इन्फ्लुएंस? अमेरिका तो मूर्ख बना रहा है, उनसे नोट भेजता है, खाना खरीदता है, मैन्युफैक्चरिंग खरीदता है, फिर उनके बच्चों को भी इधर पढ़ाता है, इंडोक्ट्रिनेट भी करता है, फिर उनकी कम्युनिस्ट पार्टी में घुसता भी है। तो टोटल तरीके से चाइनीज को देखा जाए तो ढैंचू ढैंचू की आवाज आएगी बाहर बॉक्स के अंदर। भारत ऐसा देश तो नहीं है, हम तो इतिहास कि हमारे तो कल्चर्ड सिविलाइजेशन है, दुनिया की सिर्फ एकमात्र सभ्यता है, बाकी सब तो सभ्यता नहीं है। मतलब गाय का दूध पियो, गाय को मार दो, ये सभ्यता होती है? तो भारत एकमात्र देश है जहां सभ्यता है और जहां पे ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है टुडे। तो आई डोंट थिंक सो चाइना इज ए फैक्टर इन एनीबडीज क्रिएशन, एनीबडीज इन्फ्लुएंस। अब आज की बात कर लेते हैं कि चाइना ने वेपन सप्लाई करे रशिया को टू फाइट इन यूक्रेन, सबके सामने बाहर आ गया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिका में इन्फ्लुएंस किया इलेक्शंस में, सो दैट टिकटॉक चलता रहे। टिकटॉक के लिए किया था पूरा इन्वेस्टमेंट, अब वो चलता रहे। तो दीज आर द स्मॉल इट्स एंड बिट्स। अब चाइना क्या कर रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए वापस भारत से कनेक्शन बना रहा है। क्या वो चाइनीज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पैसा देगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को? डेफिनेटली देगी, कमजोर करेगी, लेफ्टिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। तो ये सब बातें तो भारतीय गवर्नमेंट को मालूम ही है। तो भारतीय गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन विद इंटेलिजेंस सर्विसेज एंड काम करें इसके ऊपर। और चाइना की, अमेरिका के ऊपर क्या है, मैंने पहले बोल दिया, अमेरिका इज यूजिंग चाइना फॉर बाइंग चीप गुड्स, और वो कभी बंद होने वाला नहीं है, कभी बंद होने वाला नहीं है। एवरी सिंगल कांग्रेसमैन, सेनेटर, कहीं भी उसको दिखता है कि जहां पे $2 बचा ले, वो $2 बचाएगा ही। The तो profit चाइना motive, the profit motive. Yeah, बचाएगा ही, उसको बचाना ही yeah, yeah. पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है। और तो चाइना का यूज तब तक होता रहेगा जब तक अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स चीपर देन चाइना। वो होने वाला नहीं है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस कभी अमेरिका में खत्म होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो तो चीप सोर्स है एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। और अमेरिका और भारत, भारत इज द ओनली कंट्री जो बोलती है मेड इन चाइना इज बैड। अब क्या करोगे भाई, अब कैसे बनाओगे? तो तो आई डोंट थिंक सो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन एक समय में आके बोलेंगे, भाई हो गया बहुत, हमसे राजपाट नहीं होता, हम वापस नाव में बैठ के यूके जा रहे हैं। जैसे आए थे That's वैसे ही जाते that's a good humor. I like it. I like it. कि हमसे राजपाट नहीं चलता, हम वापस इंग्लैंड जा रहे हैं। That's a हाँ, good. अब देख लो ना, Yeah. अब देख लो ना, विवेक रामास्वामी इज प्रोमिनेंट, ही इज द वॉइस। तुलसी गबार्ड इज प्रोमिनेंट, ही इज द वॉइस। अगर विवेक रामास्वामी, मैं उसको बकबक बाबा बोलता हूँ, इतना बढ़िया बकबक नहीं करता तो ट्रम्प को जीतने के कोई चांसेस थे? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अब ट्रम्प भी देख रहा है कि इसको मेरे अंदर इतने गुण दिखाई दे रहे हैं, मतलब मैंने तो कुछ अच्छा किया होगा। अरे भाई वो तो आदमी इज ओरेटर, वो बोल सकता है अच्छी तरह घंटों तक। तो entire Trump's image was made by Vivek Ramaswamy, a Hindu guy praising a non-religious guy for the Christian audience. That's a that's how Vivek Ramaswamy built Trump campaign.
इसको लोग भूल रहे हैं। I totally agree with you that Vivek Ramaswamy, by calling himself further right of Trump, he gave legitimacy, he made Trump moderate. Exactly, He exactly. made Trump moderate. Yeah. and, and his entire campaign, he's so loved and liked. I mean, you know what? Whenever there is a Vivek video, I don't listen to the video, I see the comments down. And the way he created the likeness, दिनेश जी अपना बंद करिएगा ऑडियो जरा, आपका कर 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 आवाज आ रहा है. सो जितना वो जिस जिस तरह से उसने बिल्डअप किया ट्रम्प की इमेज, दैट्स phenomenal. I think Trump should pay him millions of dollars for his campaign, for building his image in the election campaign ट्रम्प for that. ठेका ले ला, ट्रम्प तो देने वाले नहीं उसको। नहीं, ट्रम्प देने वाला नहीं है, लेकिन लोग जस्ट हम अगर हम आप इस चीज को देख सकते हैं. I mean, we are, I would say we are above average observers. I would put myself most humbly as a above average category observers. So there are many intelligent people sitting in the powers that be who are watching every word of everything that says. That's what America is. They watch every word. Like when you said, the Jaishankar said we don't care for what America says. It was not care. It was that we are not worried. It's a huge difference. So इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि what he said was we are not worried about that. We are perfectly fine. To point to Dinesh ji's point, we are ready for it. To your point, we are ready for it. This eventuality, ये आज की बात नहीं है. हमारा रास्ता अपना तय है. तो इस बात पे आते हैं विवेक रामास्वामी के नाम पे. अभी उनकी चर्चा हुई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, होमलैंड सिक्योरिटी होंगे, ये वो होंगे. कोई भी पोजीशन उनको मिल नहीं रही है. वो उसका क्या पोजीशन है कि क्या जाएंगे? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो बंद कर देंगे ट्रम्प, तो वहां उनको जाने की जरूरत तो है नहीं. तो ही डजंट नीड. सो वेयर डज विवेक गेट यूज्ड, दिनेश जी? वेयर डू यू विवेक्स टैलेंट विल बी यूज्ड बाय ट्रम्प, or he will, or everybody will be too scared of his talent? So, yeah, thank you. Yeah, thank you for the question. So, let me give you some broad information which you've already discussed just now. So, Vivek Ramaswamy, correctly, as Aditya Singh said, that he transformed the image of Trump. But what is the reason for Vivek coming into the Trump's campaign after he lost his, primary? The reason is, just coming back to my original talk, was USA India relationship, they have to come back to normal. Okay, now this normalcy uh, was not there before Modi, or before the nuclear deal which was done in 2008. So they have to have political relationship. Okay, good understanding. Military relationship is good. It's going maybe slowly, and I will talk about the G also, because the arms and military defense cooperation will keep on increasing. Okay, there will be some delays. I will tell you the reason also. But this political relationship is very key, and Vivek comes into this picture at this point. Why? His age, and he's young, and he will connect to the new generation, next generation. See, the past is past, but they are working on the future. That's why Nikki Haley does not come in the picture. All the old leaders do not come in the picture. It is a new leadership, new generation, who will have to build the relationship between India and USA with the same generation, with the same age group, so that this will carry on for long term. Because remember, if America is going back to isolationist policy, okay, who will carry the future? That is India, with the young population for the next 100 years. So how will they connect with India? Through people like Vivek Ramaswamy. This is something we need to understand. Okay, something like that you will see in other young leaders, Indian American leaders, who are yet to come in the picture. And there are many good pro-India people in the Trump campaign. And Trump's sons are also, they visit India. They has a good establishment, Trump Towers. New projects are coming in. Some 25 new towers are coming in India. Sorry, yeah, in India. So it's a big deal for business-wise also, for the Trump enterprise. But from a US India relationship, they are building the foundation right now
for a long-term engagement with India. That is why this G engine delays around are just uh, momentarily for at this point it's not really significant. It will all pass through, and I believe initially I thought it will all start happening pretty soon or when Trump coming in, but there is something going on there. It will take 10 years before India USA defense cooperation will go into full swing, because India also has to prepare itself to be able to absorb this technology and build a deep industrialization base inside India, so that it can absorb all this defense technology and build up production base inside India. So there is that progress going on. From a trade point of view, there are several commentary coming in. India is a relationship will go through, as Aditya Satsangi said, China is actually it has been caught in a trap. That is true, because that trap was set in 1960s, 70s, and 79 when Deng came in and he opened up the economy. China had to be brought into the world system, including all multilateral institutions, including United States Security Council, UN Security Council in 1972, because they needed China to oppose the Soviet Union. Now, after 40, 50 years afterwards, now China has a position, but its political system is still closed. That transformation inside the China they're working on by bringing in more Chinese into Western countries, so that they become more comfortable. The rich Chinese are coming in. There is a huge, big process going on. So they are accommodating this Chinese nationals, rich Chinese trading partners and company owners and all those rich people, because they need a transformation, and it's not going to happen so soon. It will take another 10, 20 years, and that is why you see a lot of these contradictions in a lot of this policy. And that is why American foreign policies also, there is some contradictions you see, because they cannot let go of the Chinese past policies immediately. India is moving fast because India cannot wait for America. India has to move fast because young population, we have to grow faster. So if there is a delay from the American side, India will move forward and go with Europe, Germany, Russia, and all BRICS countries. Okay, so there is this thing we need to understand. This global differences. World is changing rapidly for some countries, but for some countries it is still in the past. Thank Past. you. Thank Yeah. you very much. But the last few minutes I want to spend on Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard has been found, it was a very nice statement made by some people, mainstream American guys, who said, if Liz Cheney goes to Democrats and we get Tulsi here, that's a great deal. So, like Vivek Ramaswamy was a great deal for Donald Trump, Tulsi coming this side was a great deal. Great joining Republican Party was a great deal, and Liz Cheney going that side was a good bargain. I would put it that way. So, do you see, both of you? The question is to both of you. Do you see Trump? And she has been she's the co-chair of the transition team, which is a huge thing. For a transition thing is a very big thing. She is a lieutenant colonel in the army, and she's politically very savvy. Look at the way she demolished Kamala Harris in the very first debate. That बिना एक delegate जीते हुए उनको छोड़ना पड़ा. And she has been very firm in her opinion. She has a great public acceptance as a person. Forget about politics. Both Vivek and Tulsi have huge American acceptance. Forget the religious fanatics. They are a different lot altogether. And Coulter and others, I don't care, because they are more irritants than impactful otherwise, because there are a lot of people with bigger sense. Your thoughts, both of you, on Tulsi Gabbard and her likely involvement, and Aditya, you start first on that. दिनेश जी अपना माइक्रो बंद, अपना स्पीकर बंद करिएगा प्लीज. थैंक यू. थैंक यू. देखिए, हरे कृष्ण हरे राम करके तुलसी ने लगा दिया इनका राइट. बेड़ा पार. उन्होंने प्रभुपाद की चर्चा की एक स्पीच में, मैंने देखा वो वीडियो. मैं उसको बोलने वाला था, बट आई वाज वंडरिंग वेदर यू कॉट ऑन टू दैट और नॉट.
वो Yeah. सुनील खमानी सारे वीडियो भेजते रहते हैं। Hmm. तो ये जो तुलसी गबार्ड ने जो स्वाहा किया है एक तरीके से रिपब्लिकन पार्टी का, आई कंसिडर हर वन नॉच अबव विवेक रामास्वामी, वन नॉच अबव, Okay. क्योंकि कंसिस्टेंट है। Wait. आपने कहा स्वाहा किया है रिपब्लिकन पार्टी का, not that. That's not. स्वाहा किया है डेमोक्रेटिक पार्टी का ना? नहीं, रिपब्लिकन पार्टी का भी Unless your interpretation is different. नहीं, मेरा डिफरेंट ही होता है। अच्छा, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी का स्वाहा हुआ है, हाँ। डेमोक्रेट तो काउंट ही नहीं करते, असुर जाती है, काउंट ही नहीं करते। Okay. रिपब्लिकन पार्टी का स्वाहा हुआ है क्योंकि अब यहाँ पर भगवान कृष्ण आ चुके हैं, ठीक है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुधर। अभी अर्जुन कौन है पता नहीं है अभी, लेकिन कृष्ण भगवान का नाम तो आ गया एटलीस्ट रिपब्लिकन पार्टी में। अब यहाँ से शुरू होगा इनका वापस ओरिजिनल प्रोग्राम डीस्ट बनने का। डीस्ट मतलब सनातनी, किसी जीसस में बिलीव नहीं Yeah, their 5 founders were all these. That's और right. डीस्ट वो कोई भी क्रिश्चियन नहीं था उसमें से एक भी। जॉन एडम्स ने लिख के दिया है मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, है ना। तो नाउ आई थिंक इट्स ए, क्योंकि आज ये तो प्रूव हो गया है कि रिपब्लिकन थिंक टैंक में बुद्धि है ही नहीं। इन्होंने जो भी कैंपेन रन किया उसका कैंपेन का क्रेडिबिलिटी बनाया विवेक रामास्वामी ने, तुलसी गबार्ड ने। बाकी टकर कार्लसन तो पुरानी बातें बोल रहा है। अगर टकर कार्लसन वाज इन चार्ज ऑफ रिपब्लिकन पार्टी दे वुड बी सिटिंग इन अपोजिशन टुडे, ठीक है। कि डेमोक्रेट्स इनको चबा जाते बुरी तरह, क्रिश्चियन नेशनलिज्म पे तो चबा जाते हैं इन लोगों को। सो आई थिंक तुलसी गबार्ड्स एडिशन इज द टर्निंग पॉइंट इन अमेरिकन हिस्ट्री दैट भगवान कृष्ण इज बैक। क्योंकि ये देश तो सनातनी देश है, क्रौंच द्वीप है ब्राह्मण के अनुसार, और इस देश में जो पुराने नेटिव अमेरिकन है सब सनातनी है। सो आई डोंट थिंक सो कि इस देश में रिपब्लिक। अब इसमें डायरेक्टली आंसर करता हूं आपको। तुलसी गबार्ड एडिशन इज अ टर्निंग पॉइंट इन रिपब्लिकन हिस्ट्री, और मेरे को ऐसा लगता है फ्यूचर में, और आपके शो पे पहली बार बोल रहा हूँ, तुलसी गबार्ड और विवेक रामास्वामी विल बी द फ्यूचर विनिंग टिकट फॉर रिपब्लिकन पार्टी। नो एंग्लो सैक्सन विल टाइक, क्योंकि एंग्लो सैक्सन एक दूसरे को चाहते ही नहीं है। अगर चाहेंगे तभी होगा ना, एक दूसरे को चाहते ही लड़ मरते हैं। आपने लिस चेनी की बात करी, गुड बार्गेन। लिस चेनी को तो कोई थोक के भाव में भी नहीं खरीदेगा, इतना गंदा प्रोडक्ट है। को उसको कौन पैसा देगा उसको इन्वेस्ट करने के लिए। बट यस, इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इट्स ए गुड बार्गेन, जिसने भी ऐसा बोला। बट दोनों के बीच कंपैरिजन ही नहीं है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। Thank you. Dinesh ji, your last words, then we will close the program Yeah. conversation today. So, Tulsi Gabbard, I met her almost 10 years ago. Okay. So, in her initial campaign, so I met Sunil ji also, her campaign manager. So, I followed her political career. So, she was a Democrat and a senior voice of Democrats in the Democratic Party. But after these wars and when she became vocal, and she talked about Syria war and all these different foreign policy of America, she became more, I would say, prominent in terms of the changes which are going to happen inside America. And Trump policy was a natural place for her. uh, I've seen her talk about Bhagavad Gita when she used Bhagavad Gita when she was under stress when she was deployed in Iraq. So I have got a lot of these quotes from her. So she is a real, as it's been mentioned, that she's really true Sanatani who can really change the political landscape in America. Now, in the current role, in Trump's um, new administration, second administration, she came with the big followers of Bernie Sanders in 2020. So when Trump won in 2016, 16. she had a huge following of Bernie Sanders' young generation. At that time, Sunil talked to me. I said, those followers will follow her wherever she goes. And that's exactly what happened in 2024. Okay.
They were there with her in 2020, and with 2024 they followed her, and these are the new generation. And this generation, and she has got a great following, and they may be, some of them may be woke, some of them may be, you know, I had predicted this, and they have come and they have voted for Trump. If you look at the voting patterns of the new generation in this election, you'll be surprised. Plus So 10 amongst the millennials. Plus 10. Plus 10 for her. Republican. exactly. So Yeah. she brings in the new generation. So her policy and what leadership she's providing in this administration is very critical, because she's leading the new generation, and with her philosophy and with her Sanatani philosophy, she's going to transform many aspects of the foreign policy, as been, both of you have told. And the connection to India and a lot of these, the new world will be, it will be followed up, but we'll see how it goes. But there is a great potential at this point. Thank you. Thank you very much. Thank you, both of you. And about Tulsi, I would want to say one thing. 10 years ago, I also had a picture taken here in Manhattan when I supported her campaign all out. And the important part about Tulsi is also the fact that she contested the military industrial complex that virtually runs American foreign policy. She stood up against that. And she said that as a soldier, I saw this happen. And she is not hesitant to say so. That's courage. That's what you said, that Bernie Sanders followers, the youth followed her. Vivek Ramaswamy in his campaign was always talking that I'm the Zenelli, I'm the current generation. I'm the actual representative of the current youth into the entire Republican Party, and he's Republican. So it definitely brought in significant amount of votes of the Zennial generation. That showed it. 10 plus 10 was the number there. So this is very critical. And I want to thank both of you for being here. Very, very interesting conversation. I liked it. And the future, the direction, that looks good. My only warning to people on both sides of the aisle, just tone down your expectation. Let the water flow, and let's not jump to conclusion that, oh, Trump is doing this. Well, he's doing his job for his country. You have to do the job for your country. This is my suggestion to India. America is doing for itself. You must do what you must do for yourself, what is required. If you do not do what is required, there will be an opportunity loss. And that's what is important. Find the convergence points, underplay the divergences, which will always be there. It's part of a fluid relationship. Focus on the convergence, ignore the divergences or undermine the divergences, and focus on related issues that serve both countries rather well. Thank you very much. With these words, Satyameva Jayate, truth must triumph, and for truth to win, you and I will have to stand up and fight for it. Thank you very much. Thank you.